Okay, so whenever you are writing this class in PHP, so first of all header files will not be there in PHP, right? So you have to use PHP over here and PHP over here. Delimiters are there. Remaining syntax is same, that is class student, right? Here you do not need to specify the data type of any variable in PHP, right? So right now my variable name is roll number, so I am writing here $roll number, right? And you have to write here public or private specified thing over here, right? देखो, so in C++ what you were considering this, इसको आप कैसे consider करते थे कि जो यहाँ पे होता है public के ऊपर वाले part में होता है, that is by default private. You were considering in C++ like this. So in our fine. So these all are the private data, right? These two are the private data. So in PHP, if you want to specify that this is a private data, you have to write a keyword private $roll number, right? And you do not मारो काम से. If I am writing $name only, then it will consider it as an array, right? But I am considering this as a private, right? Everyone is clear up to this? Yes or no? Fine. Now the remaining part, these two functions, these two member functions are public, right? So you have to specify that keyword over here, that is public. Now this is your function, so you have to write function over here, right? So इसका कोई भी return type हम नहीं लिखते थे. If you remember, in PHP functions also we were not specifying any return type. We were only writing return, whatever the return thing was. જે પણ return કરતું હોય આપણે લખી નાખતા હતા, automatically return consider કરતા. Clear up to this, everyone? Let me modify this for, यहाँ पे भी क्या लिखूँ मैं? Public function, right? So now you want to store, in roll number you want to store 20, in name you want to store SYVC, right? But here you have to use one pointer that is $this, and this pointer you have to use over here. So this pointer is डायरेक्टिंग टू, और किसको पॉइंट करता है? वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो ऑब्जेक्ट आपने मीन्स जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता है. सो यू हैव टू यूज हियर दिस पॉइंटर, राइट? सो $this अगेन. Self is not actually supported properly in PHP. So here instead of cout, what I need to write? Echo roll number is $roll number. Sorry, here also $roll number, $name, I think $this. Fine. Let us see. एक वक्त जो लिया. Now, whenever you are writing this class in PHP, no need to complete by semicolon, right? Semicolon यहाँ पे नहीं होगा. And remove this part. इसको पहले पूरा निकाल दीजिए, right? पहले हम देखते हैं कि class हमारा सही बना है या नहीं बना है. Fine. So let us save these things and let me save in your one of the folder. Fine, so I am just giving the name simple class.php. Let me execute this file. Now no need to start the service of MySQL because we are still not working with database now. So I am closing this part. Let me go in a browser. Localhost, SYVCA2 and class. Fine, so let us implement this.
so we are not getting right now any of the output, right? Means I can say that अगर अभी भी कोई भी दोनों में से कोई भी फंक्शन कॉल नहीं हुए हैं तो अभी हमें आउटपुट तो दिखाएगा ही नहीं. वी नीड टू क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, हमें एक ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा जो इसको कॉल करेगा, राइट? सो लेट अस क्रिएट वन ऑब्जेक्ट. सो देखो ये क्लास कैसे बनाना है वो पता चला, कितना मॉडिफिकेशन मैंने किया. यू हैव टू स्पेसिफाई द कीवर्ड्स ओवर हियर वेदर द वेरिएबल इज प्राइवेट और पब्लिक, राइट? सेकेंड थिंग, you have to write public and function for specifying that this is a function. Clear? Now if you want to access any data member, now this is my data member, these two are the data members, right? And these all are the member functions, right? So if any member function is accessing the data member, so we have to use which pointer? This pointer. So this pointer is automatically pointing to the same object जो उसको कॉल करता है. समझ में आया? सो वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है बिकॉज इन C++ वी वर नॉट स्पेसिफाइंग सच थिंग्स, राइट? C++ was automatically considering the same object, but here we need to specify that pointer $this. Fine. Next one, I have allocated the values in this function in get data, and in put data I am just displaying the names and roll number by writing the same thing. Now after this I need to call one object. I need to create one object. अब यहाँ पे integer main लेने की जरूरत है. This is not a C++ or C program, right? So यहाँ पे कोई भी integer main लेने की जरूरत नहीं है. You have to directly consider, suppose $obj is my object name. So I want to create $obj over here. So you need to write new keyword over here and class का नाम क्या है, right? So this is the syntax to create an object, right? So this is a syntax to create an object. Okay. So this class is currently considered as a one of the function for this object, right? So let us see. Suppose कहीं मैं syntax भूल गया हूँ तो एक बार हम execute करके भी देख लेंगे, right? And now obj wants to call, obj किसको कॉल करना चाहता है? get data को और put data को, दोनों को, right? So if you want to call any of the function, so you have to write obj, that is object name, then arrow operator, right? And you have to use here इंस्टेड ऑफ डॉट ऑपरेटर आपको क्या यूज करना है? अब पॉइंटर और दी एरो ऑपरेटर. फाइन. सो पुट डेटा. क्लियर विद दिस? सो लेट अस सी द आउटपुट. कहीं ऐसा आउटपुट आ रहा है या एरर दे रहा है, क्या है देखते हैं हम. सो इट इज गिविंग मी द फैटल एरर, कैन नॉट एक्सेस एम्प्टी प्रॉपर्टी ऑन लाइन नंबर 9. सो लेट अस गो फॉर लाइन नंबर 9. आई वाज नोइंग दिस. So the mistake is, देखो $this is pointing to the roll number variable. So जब आप ऐसा लिखते हो तो यहाँ पे डॉलर नहीं लिखना है, ध्यान रखना ये चीज़. ये सिंटेक्स में मिस्टेक हो सकती है, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया वैसे आप भी हो सकते हो, राइट? सो इन $this you have to provide $in this before this keyword, and जो भी आपका वेरिएबल है, जो भी आपका डेटा मेंबर है, उसमें डॉलर नहीं देना है. समझ में आया? अदरवाइज यू विल अगेन गेट द फैटल एरर लाइक आई एम रीडिंग. फाइन. सो देखो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया, अगेन लेट अस रिवाइज ऑल थिंग्स. क्लास कैसे डिफाइन किया? बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड. डेटा मेंबर्स वी आर डिफाइनिंग बाय यूजिंग द विजिबिलिटी मोड्स, दैट इज प्राइवेट एंड डेटा मेंबर डायरेक्टली, बिकॉज हमें यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, राइट? और मेंबर फंक्शन को कैसे हमने डिफाइन किया? पब्लिक फंक्शन एंड जो भी फंक्शन का नाम है वो, राइट? एंड उसमें से मुझे कोई भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखता है यहाँ पे? $this pointing to roll number, $this pointing to name. Fine. So I am directly giving the values over here, and here public function, again put data function is that, और put data में मैंने क्या करवाया है यहाँ पे? this pointing to roll number, उसको मैंने प्रिंट करवाया, और this pointing to name, उसको भी मैंने प्रिंट करवाया. So right now if I want to create any of the object over here, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? obj is equals to new student class. Right now this is considered as a student class, not as a function, right? तो यहाँ पे आप न्यू कीवर्ड यूज करके उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप कोई भी फंक्शन को कॉल करोगे, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डॉट ऑपरेटर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? एरो ऑपरेटर. एवरीवन इज क्लियर अप टू दिस? यस और नो? फाइन. सो नाउ कैन आई क्रिएट वन लॉगिन टाइप ऑफ फॉर्म? मैं बनाऊंगा नहीं, डोंट वरी, बट आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू एंड आई एम आस्किंग यू.